A very good morning to all my lovely viewers. Welcome back to my channel. तो चलिए आज हम बहुत एक अच्छी उम्दा सी वीडियो लेकर आए हैं आप सबके लिए। और उस वीडियो में क्या है, हम बैंकिंग के कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं along with their explanations। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So the first question which we have here today is a word जो कि आपको दिखाई देगा इन येलो कलर लाइक डिस्पैरेट। एंड हमने इन क्वेश्चन के पहले ये सारा क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन क्या है, हमें करना क्या है। एक्चुअली हमने यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शन ए बी सी डी एंड ई। इनमें से हमने चूज कर कर बताना है कि कौन सा ऑप्शन गलत है, जो कि इसके अकॉर्डिंग जो मैच नहीं कर रहा है। दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज। सो लेट अस बिगिन रीडिंग द फर्स्ट पार्ट। द वर्ड इज डिस्पैरेट। तो हमने क्या करना है, इस वर्ड को यहाँ पे सेंटेंसेस गिवन है, हमने पहले तो वर्ड सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, वर्ड का मीनिंग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, और जो इसके अकॉर्डिंग फिक्स नहीं बैठता होगा हमने वो ऑप्शन सिलेक्ट करना है। The people in the community are so disparate that their ideologies are very distinct and difficult for any other common man to understand। तब वर्ड कौन सा यूज करा है इन्होंने, disparate। ध्यान दीजिए। Second sentence, Ravi became disparate after the thief stole his wallet and ran away। The third sentence, she has always got disparate ideas for which she has recently been awarded by the corporate। अब हमने इस वर्ड का मीनिंग देखने की कोशिश करनी है सेंटेंस के अकॉर्डिंग। द फर्स्ट सेंटेंस, द पीपल इन द कम्युनिटी आर सो डिस्पैरेट। ध्यान दीजिए, दिस वर्ड हैज कम फ्रॉम डिस्पैरिटी। This is the adjective and ये वाला जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है, वेरिएशन, अलग अलग, डिफरेंसेस। तो हमने देखना है कि इस सेंटेंस में ये वर्ड सेट बैठ रहा है। द पीपल इन द कम्युनिटी आर सो डिस्पैरेट। डिस्पैरेट का मतलब दे आर सो डिफरेंट, वो इतने अलग अलग हैं, that their ideologies are very distinct, अलग हैं, and difficult for any other common man to understand। तो ये वर्ड तो हमारा बिल्कुल सेट बैठ रहा है। सेकेंड सेंटेंस, रवि became disparate after the thief stole his wallet and ran away। तो रवि became different, बात सी बन नहीं रही है। So this is a bit different हमारा सेंटेंस ये वाला। The third one, she has always got disparate ideas। Disparate, variation, multiple, अलग अलग ideas, different ideas, for which she has recently been awarded by the corporate। तो जो odd sentence है हमारा, जो इसमें मैच नहीं कर रहा, that is option number 2। तो यहां पे देखते हैं कौन सा है। Only one, no, this is not there। Only two, yes। Only three भी नहीं है, both, ये भी नहीं है। तो जैसे जैसे हम रूल आउट करते जाएंगे हमें अपना करेक्ट आंसर मिलता जाएगा। सो हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, ओनली टू। आई होप दिस इज इजी एंड अंडरस्टूड बाय यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज इनकम्बेंट। इनकम्बेंट। नाउ George Frederick is the present incumbent and he has 3 more years to serve। Second sentence, she felt it incumbent on her to be there for her cousin during the surgery। The incumbent has been awarded a new contract despite the heavy competition। अब इससे आपको क्या पता लग रहा है कि कोई incumbent एक ऐसा वर्ड है that means the present employee or the person who is in some current position। आप पहले सेंटेंस में दोबारा से देखते हैं, जॉर्ज फ्रेडरिक is the name of a person, is the present incumbent। अगर मैं लिखूं is the present employee तो भी चल जाएगा, and he has 3 more years to serve। मतलब he is the person who is in position for that particular time period and has 3 more years to serve। तो ये सेंटेंस तो हमारा बिल्कुल सही है। Next, she felt it incumbent on her to be there for her cousin during the surgery। Incumbent तो ये different सा word है and it is not matching the sentence which it is put in। तो this is different here।
The incumbent has been awarded a new contract despite the heavy competition. तो incumbent यहाँ पे भी एक नए जो present employee है उसके लिए यूज कर रहे हैं हम. तो हमारे लिए जो different sentence है that is option 2. And which option have we here? Let us see. Only one? No. Only two? Yes. Only three? No. Both 2 and 3? No. And all are correct. ये भी नहीं है. So the correct answer is option B. This is the correct answer. Okay, the next question, ambivalent. The next word which they have put in is ambivalent. She remained ambivalent on her promotion as she loves both her career and family. Next sentence. Ambivalent decisions always lead to disaster or failure because of the lack of confidence. Next is there is ambivalency among men when a woman or girl rides a geared bike. Can you spot the meaning of ambivalent or ambivalency? Ambi means multiple, valent means decisions, or when there is confusion in some decision, when we are not very clear about what we are thinking or we are going to think upon, that is called ambivalent, with multiple thoughts. So the first sentence, she remained ambivalent. Ambivalent here is she remained confused on her promotion as she loves both her career and family. तो यहां पर सेंटेंस क्या कह रहा है कि वो बहुत एम्बिवेलेंट हो गई थी, कंफ्यूज्ड हो गई थी ऑन हर प्रमोशन, प्रमोशन मिलने पर. क्यों? बिकॉज शी लव्स बोथ हर करियर एंड फैमिली. मे बी प्रमोशन के समय उनको कोई और ऑफिस दे दिया गया हो एंड शी हैड टू रीलोकेट. But at that point of time, she was confused that whether she should join there or not join there. Why? Because she loves both her career as well as family. Now, here it means confused state of mind. The next one, ambivalent decisions always lead to disaster or failure. अब यहां पे ambivalent का क्या मतलब है? Confused decisions. Ambivalent decisions, confused decisions. जब हम दो राहे पे खड़े हो जाते हैं आकर, हमें यही नहीं पता चल रहा है कि हमें लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, which one to choose, whether this is the correct one or the other one is the correct one. When we are totally confused, a perplexed state of mind is called ambivalency. Always lead to disaster or failure because of the lack of confidence. तो यहां पर भी ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही बैठ रहा है. The next one, there is ambivalency among men when a woman or girl rides a geared bike. अब यहां पर ambivalency नहीं होगी. क्यों? क्योंकि whenever अ वुमन और अ गर्ल राइड्स अ बाइक, जब भी कोई इंसान, कोई आदमी उस चीज को देखता है तो उसके मन में यही बात आती है, या तो ये बहुत अच्छा चलाएगी या फिर ये बहुत बुरा चलाएगी. देयर इज ओनली वन स्टेट ऑफ माइंड, नॉट अ कंफ्यूज्ड वन. सो दिस इज, आई थिंक, इज गोइंग टू बी द ऑप्शन वेयर दिस इज इनकरेक्ट. So option 3 is going, we are going to go with option 3. देखते हैं यहाँ पे option 3 किसका है. Only one? No. Only two? No. Only three? Yes. We are going with option C. Option C. So here we have the correct answer, option C. Let us move to the next question. Lightning. Lightning. Very easy. सबको याद आ रहा होगा lightning क्या होता है? Thunderstorm वाली lightning. Yes. Exactly. It was a lightning strike by Sir Ravindra Jadeja with the last two balls. Lightning strike. एकदम से quick, sudden, fierce. The thunder lightning was so heavy and bright that the huge neighborhood tree was struck and burst into flames. मतलब थंडर लाइटनिंग, बिजली की चमकमाहट इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि वो जो नेबरहुड वाला ट्री था, इट वॉज बर्स्ट इनटू फ्लेम्स.
The last one, e-commerce site Amazon offers lightning deals that have a preset time limit to place the order. तो अब यहाँ पे आपको पता लग रहा होगा lightning का मतलब क्या है, क्या निकल के आ रहा है. lightning means कोई चीज बहुत ह्यूज है, मैसिव है, बहुत ज्यादा फियर्स है, मतलब तेज तरार. That is what it is saying. Lightning strike, जोरदार स्ट्राइक किया. Then thunder lightning, so the again बिजली वाली चमकमाहट. Then the e-commerce site Amazon offers lightning deals, बहुत ज्यादा डील्स ऑफर की. तो अब यहाँ पे कोई सेंटेंस गलत मुझे तो लग नहीं रहा. Let us see the options we have. Only one, no. Only two, no. Only three, no. Both two and three, no. All are correct. So all the options given here, they are correct. So the option, I'll go with option E. आई होप दिस इज गोइंग टू बी वेरी क्लियर टू यू. हमने क्या करना होता है, पहले वर्ड को चूज कीजिए, सेंटेंस को पढ़िए एंड देन उसका मीनिंग इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कीजिए. इफ यू आर गेटिंग द करेक्ट मीनिंग आउट ऑफ दैट सेंटेंस, देन इट मीन्स दैट ऑप्शन इज द करेक्ट वन. अगर उसका ऑप्शन का मीनिंग ऑपोजिट होकर आ रहा है, दैट मीन्स दैट इज द रॉन्ग वन. तो हमने यहां पर रॉन्ग ऑप्शन को ही चूज करना है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं. Called. The next word is called. Very important and very easy word. Let us see the sentences here. First one, the marriage was called off after the dowry issue. तो सेंटेंस से ही समझ में आ रहा है, the marriage was called off. Called off means cancelled. Called off after the dowry issue. Next, I called her around 9:30 a.m. in the morning, but she was busy and told me to send a text message. मैंने उसको 9:30 बजे मॉर्निंग में कॉल किया, but she was busy and told me to send a text message. उसने मुझे बोला टेक्स्ट मैसेज भेज दो. Why? She was busy. Next, I was called down by my mother for not putting the clothes to wash. I was called down by my mother. Called down means डांटा. मेरी मदर ने मुझे क्रिटिसाइज किया, डांटा, मुझे कहा कि मैंने आपको ये काम बोला था एंड यू डिड नॉट डू इट. कॉल्ड डाउन, ध्यान दीजिए, कॉल्ड डाउन का मतलब नीचे बुलाना वो नहीं है, बट इट इज ऑन द कॉन्ट्ररी, इट इज criticized. So called down means criticized. Criticized. डांट, मुझे डांट मिली इस चीज के लिए कि मैंने आपको कहा था कपड़े धोने के लिए बट आपने वो काम नहीं किया. अब यहां पर ये देखिए, फर्स्ट सेंटेंस सेज एंड व्हाट आर दीज नोन एज, एक्चुअली दीज आर नोन एज फ्रेजल वर्ब्स. तो हमें कोई वर्ड के साथ कभी भी कोई भी वर्ड एक और ज्वाइन किया जाएगा एंड हम उसको फ्रेजल वर्ब बोलेंगे एंड उनके मीनिंग्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कॉल्ड ऑफ का मीनिंग है कैंसल्ड, कॉल्ड टेक्स्ट टेलीफोन करना, and called down means criticized. So it is very important to understand the meaning of what phrasal verb has been used. Now what is the wrong option here? I think all are correct. Now what is the correct one? Both 1 and 2, no. Both 2 and 3, again no. Both 1 and 3, again no. All are correct, I guess. All are wrong, no. All are correct. E option, I'll go with E. So option E is the right one. All are correct. Thank you very much for watching this content. I hope you have really liked this video. For more such videos, please stay tuned to my channel English with Surabhi. Thank you.